को पता नहीं सबसे कौन से नेट क्या नेट ही गया हो गया सब हो गया Good morning. Can you hear me? Can you hear me? Okay. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Morning. There was some problem with the net. We had to start. That's why we started a bit late. So board clear नहीं. Board is not clear. Okay, we'll try to set it right. Just wait a while. Yes, interesting. Receive the maximum. Clear yaar. Clear yaar. Check it once again. No, sir. There's still some problem, huh? Blurred आ रहा है क्या? Yes, sir. पूरा blur. Maybe mobile data की वजह से. वो नेट भी थे.
इसमें एक वाईफाई डिवाइस है, वही चल रहा है क्या? चल रहा है फिलहाल अभी आपके फोन। ये मैं कह रहा हूँ जो वाईफाई डिवाइस था ना हमारे पास यहाँ, हाँ वो बंद भी हो गया। वही बंद हो गया। वो बंद हो गया। ये हाँ तो वही बंद फोन। अच्छा फर्स्ट फ्लोर आप चले मुझे तो क्लियर आ रहा है, बोर्ड क्लियर आ रहा है। तो मैं अपने फोन पे देख रहा हूँ, बोर्ड की तरह दिख रहा है। सर अभी क्लियर हुआ। क्लियर हो गया? मैं कह रहा था कनेक्ट हुआ ऐसा से। ठीक है ठीक है। It was because we were connected with mobile net. Now we are connected to the institute net, and I think that's the reason it was coming blurred. Is it okay now? Yes, sir. यस सर। ठीक है. So what were we discussing yesterday? We were talking about controller design strategy. तो इसमें हमने पहले क्या देखा? पहले हमने इसमें स्टडी किया controller design for transient response control. So इसमें हमने जो configuration use की controller की, it's like this. I'm redrawing and restating the titles under a new heading, controller design strategies. And what we have discussed in it in the beginning is we have had a control strategy like this. We have a system x dot equal to x plus bu. This is your u. This is plus, and this is plus. This is your integrator. This is x dot. This is x, and then this is a. So this is your open loop system, x dot equal to x plus bu. And we are assuming that P array B is controllable. That means the system is controllable. Are you getting me? तो इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने कंट्रोलर डिजाइन किया फॉर ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूवमेंट या स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट या अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए. So we have designed a state feedback controller like this. We have taken the feedback from the states, fed it through the gain vector k. The reference input has been taken to be 0. So this is plus and this is minus. So we have used the control law as u is equal to minus kx, isn't it? And the closed loop system equation has become x dot equal to k minus bk into x, isn't it? And we have seen that under the condition of complete controllability of AB pair,
eigenvalues of the closed loop eigenvalues can be placed at desired locations by choosing K appropriately. Is that okay? So कंट्रोलर को कैसे डिजाइन करना है, K को कैसे ऑब्टेन करना है, उसके लिए मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए. एक मेथड तो डायरेक्ट मेथड बताया जिसमें हम K को a minus b k के आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ K, और डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी ऑब्टेन करते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ होता है. We must know where we want the eigenvalues to be placed. So from that we compute the desired characteristic equation and then compare the desired characteristic equation with the characteristic equation of the closed loop system in terms of K. Comparing the coefficients, we get the values of K. We substitute that we feed back the states through that gain vector K and achieve the desired transient response, isn't it? और दूसरा मेथड जो मैंने आपको K डिजाइन करने का बताया वो that was first of all converting the system into controllable canonical form, because you know that for a controllable system it's always possible to have the controllable canonical form representation for the system by appropriately choosing the value of P. We have already shown you how to obtain that value of P, and once you do that, you design the controller for the first component form representation of the system. You design K for that, because that becomes an easy job, because you just have to you just have the simple comparison there. You don't get coupled system of equations, therefore obtaining the values of K. Once you obtain K, you have to multiply it by P matrix and then you get the K for the original system. और तीसरा मेथड जो मैंने K obtain करने का बताया, that was using Ackermann's formula, isn't it? तो जो मैं कल वो कमांड कह रहा था जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, that is Ecker actually. There is one more command in MATLAB with the name Ecker, which actually uses the Ackermann's formula for computing the value. तो ये पहली कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी ट्रांजिएंट रिस्पांस को इंप्रूव करने के लिए, डायनेमिक रिस्पांस को इंप्रूव करने के लिए. तो कल हमने एक और कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की, दैट वाज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. Feed forward control is basically used for regulator design. That means you not only want that the system transient response should improve, you also want your output to follow a certain or to once in the steady state you want it to achieve some steady state value, which is actually the reference input that's given to the system. So वो जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन कल हमने स्टडी की, that is basically feed forward control. Feed forward control with state feedback. तो इसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन बना था? So this is your B, this is your U, this is like this. This is the system, this is plus plus. This is the integrator. This is X, this is X dot. And then you have B here. So this is the open loop system, X dot equal to X plus VU. So as in the previous case, we take the state feedback like this, multiply it by the gain vector K, and have it here like this. This is minus negative feedback. But then since we want the output to achieve a certain steady state value, so we have to have the output variable also here. So we have C here. From C we get Y. Okay. And this Y is fed back like this. And here you have R. So here, sorry, we are not taking the feedback of the output. I'm sorry. Output का feedback हम नहीं ले रहे, ये feed forward control है. So it's like this, and this is N here.
It's like this. Is that okay? So what was the control law in this case? मैं पूछ रहा हूं आपसे कुछ. What was the control law in this particular case? What is U equal to? U equal to minus kx plus nr. Minus kx plus nr. And n we have obtained yesterday. We have obtained the value of n. Isn't it? Yes, sir. So n जो है सिस्टम मैट्रिसेस के फॉर्म में और k पे डिपेंडेंट है, वो जो n का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया था इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए. आर यू गेटिंग मी? बिल्कुल. So your u is equal to minus kx plus nr. Minus kx plus nr, where n inverse has been obtained as minus c a minus b k inverse minus c a minus b k inverse b. Is that okay? तो मैंने कल क्या कहा था, कैसे आपको इस सिस्टम को डिजाइन करना है. आपने जब इस सिस्टम को डिजाइन करना है तो आपने पहले k का वैल्यू ऑब्टेन करना है, और k का वैल्यू ऑब्टेन करते टाइम यू डोंट हैव केयर अबाउट दिस n टर्म. You must have been given the desired value of the eigenvalues. You follow the same strategy as you follow in designing the state feedback controller for transient response improvement, and you obtain the appropriate value of k using any method that has been already discussed with you. Once you obtain the value of k, then from that value of k, because c, a, and b are already known, you can obtain the value of n. N inverse first, and then the inverse of that will give you n. You use that n here, you will be rest assured that the output actually will be following the, will actually at in steady state it will actually be reaching the, it will actually be settled down at the value r. Is that okay? So this is feed forward control with state feedback. This is the second configuration that we have studied for control. Now the third configuration that I'm going to discuss today, I'll be discussing two configurations today. The third configuration is state feedback with proportional control. आपने लैब में ऑलरेडी कंट्रोलर्स थोड़े बहुत स्टडी किए हुए हैं. In theory, I have been told that this controller design was not discussed in your fourth semester. Is it like that? Yes, sir. So basically, there are different control strategies. I will not go into the details of these strategies, but general idea I would like to give you. For example, you have a transfer function of a system. For example, you have a first order system. Like this. This is the transfer function of the system. This is Rs and this is Cs. Okay. The time constant of the system is T. This is the time constant. Normally, when we have to evaluate transfer functions in time domain, using time response analysis technique, what we do actually is that we apply some standard test inputs to the system and try to evaluate the system performance. Yesterday, I also told you that there are different test inputs. One of the most frequently used test inputs for actually evaluating the system performance is the step input. So you apply the step input to the system, and on the basis of step response, you try to evaluate the system performance in terms of its speed of response, steady state error, and other things. Now, for this first order system, if you see its step response, that means I'm applying a step input. This is T and this is RT.
I'm applying a step input, preferably a unit step input. So you take, what's the strategy for obtaining its time response? You take its Laplace. What do you get? You get Rs, that is equal to 1 upon S, isn't it? You apply this step function to the system and get CS. और बाद में time response इसको obtain करने के लिए you take its Laplace inverse and get CT. Now, for first order systems, what is this CT equal to? If this is a unit step input, what will be CT equal to? Do you remember? What's the step response of first order systems? 1 minus exponential t by tau. 1 minus e to the power minus t upon tau. तो मैंने use किया नहीं यहाँ पे t upon t, isn't it? And if we plot it, so what will be this response line? This is T and this is CT. RT we are also showing here. This is your RT step input. The response is going to be like this, isn't it? So initially there will be some transient. It will not immediately follow the reference input because it's a dynamic system. There will be some transient, and with time, if it's a stable, because it's a stable system, with time the system transient will die down and system will acquire the steady state. Now in this particular case, the speed of response or the time it takes to reach the steady state, that is usually quantified in terms of different terms. Like most commonly used term is the settling time, and we have seen that when we define some tolerance band, like if we define a tolerance band of plus minus 2%, here minus 2% only because it's not going above RT. If we define a tolerance band of minus 2%, it's going to reach the steady state in how much time? कितना time लगेगा इसको steady state तक पहुंचने में? First order system को steady state तक पहुंचने में कितना time लगता है अगर हम minus 2% tolerance band define करें? 5 time constants. कितने? 5 time constants. 5 time constants नहीं, 4 time constants लगते हैं. Within 2% of the final steady state तक पहुंचने में, it takes 4 time constants. Within 98% तक रहने में. Or whatever, let's say if you define a tolerance band of 5%, minus 5%, it takes around 3 time constants to reach the final steady state. So that's usually defined in terms of the settling time. So settling time of the system actually gives you an idea about how fast the system reaches the steady state. Because mathematically speaking, we say that the steady state is achieved after infinite time. So we are trying to somehow quantify it, and we actually define it in terms of settling time, and it's actually a function of the time constant. Means time constant जितना ज़्यादा होगा उतना settling time ज़्यादा होगा. And what is the steady state value of this output? Why will it settle down in steady state? When time tends to infinity, this becomes 0, so it will settle down at 1. So that will give you a 0 steady state error, isn't it? तो steady state performance तो इस system की ठीक है, ideal है, 0 steady state error आ रहा है, लेकिन maybe as a control engineer I am not satisfied with the settling time because time constant तो fixed है इस system का, so I am not satisfied with it. Maybe it's too slow, so I want to improve it. What do I do? What do I do if I want to make the system fast? If I want to reduce its time constant, what should I do? Yes. सर एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स भी चेंजेस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स लाइक कैपेसिटर इंडक्टर. एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स चेंज करना मींस आप सिस्टम को चेंज कर रहे हो, है ना? वो तो वही बात होगी कि मेरे पास एक सिस्टम था जिसका टाइम कांस्टेंट लेट्स से 5 सेकंड्स था, मेरे को एक दूसरा सिस्टम चाहिए जिसका टाइम कांस्टेंट 2.5 सेकंड्स ही हो, तो मैंने सिस्टम को ही चेंज कर देना है. मैंने एक दूसरा सिस्टम लेके आना है जिसका टाइम कांस्टेंट इससे कम हो, बट दैट इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ डूइंग इट. दैट लिबर्टी लगाते हैं. That liberty you cannot use. That means I have to use some control strategy. I have to use some control strategy in order to improve its transient response. So one of the easiest way of doing that is using feedback. So I redraw this configuration using a feedback, system. I use it as a negative feedback system. So I have got here RS. तो यहाँ पे मैंने ये सिस्टम यूज किया. मैंने एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन पहले यूज की 1/1 + ST करके. There can be different ways of doing it.
So I have got CS here. So I think I had discussed this once in the class. तो इसका अगर आप स्टडी स्टेट इसका अगर आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखो इसका भी मुझे टाइम रिस्पांस इवैल्यूएट करना है तो सेम प्रोसीजर में यूज करूंगा आई यूज द स्टेप इनपुट so this is your step input and I take its Laplace I get RS from that I get 1 upon x here I have CS का मैं इनवर्स Laplace लेके I get CT isn't it इसका अगर हम देखें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन closed loop transfer function अगर आप इस सिस्टम को ऑब्टेन करोगे it's a unity feedback system it's like this here isn't it so it will be gs upon 1 plus gshs because it's a negative feedback system so that will come out to be equal to 1 by 2 upon 1 plus st upon 2 you can just check it isn't it so I can call it 1 upon 2 1 plus st upon 2 I can name it star. So when you see it's where tau is equal to t upon 2. So with this simple feedback strategy, what I have been able to achieve is that the system time constant has been reduced by half. Isn't it? Means अगर system का time constant पहले 10 सेकंड था, अब इसका time constant 5 ही सेकंड हो गया. लेकिन साथ ही मैंने इसका steady state performance जो है वो deteriorate कर दिया. कि इसका जो steady state value होगा output का वो 1 upon 2 आएगा. Isn't it? Are you following me? Yes, sir. क्योंकि इसका जो response होगा इसका जो output होगा what will be that response equal to? That will be 1 upon 2 1 minus e to the power minus t upon tau. So at time t equal to infinity this term becomes 0 so CSST becomes 1 upon 2. तो ये सेटल हो जाएगा 1 upon 2 पे ही. Means जब आप इस system को step input apply कर रहे हो unit step input, the output may be something like this with a steady state error of 1 upon 2. But its time transient response will improve. It will acquire the steady state in a what you call in taking lesser time to achieve the steady state. Steady state में ये कम टाइम में पहुंचना है लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि इसका जो steady state performance है वो डिटेरियोरेट हो रहा है इसमें स्टेडी स्टेट एरर इंट्रोड्यूस हो गया है ये चीज करने से उसका रीजन सिंपल है क्योंकि आप इस सिस्टम को इनपुट ड्राइव नहीं करता इस सिस्टम को आप एरर ड्राइव करता है बिकॉज दिस सिस्टम इज नाउ बीइंग ड्रिवन बाय RS minus CS which is error ES isn't it earlier this system was being driven by RS which had a higher value now it's being driven by RS minus CS इसमें इनपुट ही कम हो गया ये सिस्टम फॉलो कर रहा है अब ES को या RS को फॉलो नहीं कर रहा आर यू गेटिंग मी Yes, sir. तो ES को फॉलो कर रहा है तो इसमें मैंने टाइम कांस्टेंट कम तो कर लिया टाइम कांस्टेंट हाफ तो हो गया लेकिन इसमें मैं थोड़ी बहुत और इंप्रूवमेंट ला सकता हूं इफ आई अप्लाई दिस ES बिकॉज आई now want that the steady state performance should improve ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस तो किसी हद तक इंप्रूव हो गया फिर भी इसमें भी वो फिक्स्ड है t upon 2 पे फिक्स्ड रहेगा if I want to make it to t upon 4 I want to do something about that and at the same time what I want to do is that the steady state performance of the system must improve steady state performance system की improve करने के लिए this ES must be actually magnified because the value of ES is less I want this 1 upon ST to follow a function closer to RS rather than ES so what should I do something like this this is plus, this is minus, this is RS. And then you have got 1 upon 1 plus ST here. Sorry. So I'll do something like this. I'll put some gain K here. Then 1 upon 1 plus ST. And like this. So this is your RS and this is CS. Okay. तो ये ES था यहाँ पे ये आपका US हो गया कंट्रोल इनपुट जो सिस्टम को जा रहा है so US actually is equal to K times ES now your system instead of following ES it will be following US because that's the input that's being applied to it
तो इसका अगर हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखें तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या आएगा? That'll be k upon 1 plus st upon 1 plus GSHS, 1 plus k upon 1 plus st. सही है? That is k upon k plus 1 plus st. ठीक है ना? That's k upon k plus 1 upon 1 plus st upon k plus 1. Is that okay? जी सर। तो ये इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I can write it as k upon, sorry, I can write it here. I can write it as k upon k plus 1 upon 1 plus s. I call this tau CL, tau closed loop, where tau CL is equal to t upon k plus 1. सही है? So you increase k, this is going to go down. If k is increased, tau CL is going to go down. That means with the increase in the value of k, which is actually a constant term, कोई भी amplifier, something, k is actually a constant. So when you increase the value of k, tau CL is going to decrease. So that actually means you get a handle to improve the transient performance of the system. K का कोई भी वैल्यू रखो, आपका appropriate value TCL का मिलेगा. Normally आपको TCL पहले पता होगा, K तो डिजाइन फैक्टर है, तो TCL के हिसाब से आप फिर K का वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो. और इसका जो स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस होगा, स्टेडी स्टेट एरर इसमें क्या होगा? ESS. That will be that will be actually RT minus CSST. RT is 1, CSST we will settle down at this value, k upon k plus 1. So that will be 1 upon k plus 1. That will be ESS. So fortunately इस वाले केस में क्या हुआ कि जितना आप k का वैल्यू बढ़ा रहे हो उतना ESS भी कम हो रहा है. वो तो होना ही था, उसीलिए हमने k इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं थे. तो इस केस में इंसिडेंटली क्या हुआ कि k बढ़ाने से आपका टाइम कांस्टेंट भी कम हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के केस में. जबकि जनरल केसेस में क्या होता है कि this doesn't always happen that a particular controller that you use in a system that will improve the transient performance as well as the steady state performance of the system. Sometimes a particular controller may improve one aspect of the performance, but the other aspect of the performance suffers. तो इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं जस्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो हमने यहाँ पे ये की यूज किया, इसको हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? We call it proportional controller. Why do we call it proportional controller? Because in US and ES are related by a constant K. Because in this case, the control law basically is US is equal to K times ES. K is a constant gain factor. Are you getting me? तो इस केस में K का जितना ज्यादा वैल्यू आप लोगे, हायर वैल्यू लोगे, उतना टाइम कांस्टेंट इसका कम हो जाएगा, मीन सिस्टम फास्टर होता जाएगा. तो आइडियली स्पीकिंग इनफाइनाइट अगर आप K को बनाओगे तो TCL 0 हो जाएगा. तो K infinity बनाने में there are some practical problems because normally K is actually physically realized using an amplifier, and you know that amplifiers do saturate, so you cannot have very high values of K. So, but ideally speaking, with the increase in value of K, you can just improve the transient performance as well as the steady state performance of the system. Is that okay? Yes, sir. ये मैंने शायद एक बार आपके साथ डिस्कस किया था, as far as I remember. ना इस केस में ये वाला जो कंट्रोलर हमने यूज किया, इस केस में एक लिमिटेशन है कि इसमें स्टेडी स्टेट एरर कभी भी 0 नहीं हो सकता. इसमें स्टेडी स्टेट वैल्यू कभी स्टेडी स्टेट एरर 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि US जो है that is related to ES by this constant K. So if ES becomes 0 or the input becomes 0 in the steady state, let us say,
the input to the system will also become 0, driving the output of the system to 0. So the limitation in this is that the steady state error can never become equal to 0. That is the limit. That is because of the configuration of the system. You can never have 0 steady state error with a proportional controller, except in some cases wherein you have an integrator in the transfer function itself. अगर transfer function में ही integrator हो, तो उस case में maybe you may get a 0 steady state error. But in general, when I am talking about first order systems, you can never achieve 0 steady state error with the proportional controller. So what if I want to have 0 steady state error? Okay, I'll come to it later on. First thing that I wanted to just have an idea about is the configuration that we used for proportional controllers using transfer function models. Now the same configuration I am going to use in conjunction with the state feedback controller in order to achieve the desired transient response as well as an improvement in the steady state performance also. तो मैं state feedback models में यही वाला configuration use करने की कोशिश करूंगा. तो जो मैंने ये configuration जो मैं discuss करने जा रहा था आपके साथ, that is state feedback with proportional control. तो ये तो background knowledge थी इसकी. Now I will come to the actual configuration. So the actual configuration, and let me rewrite it here. So I am talking about state feedback with proportional control. State feedback with proportional control. So the configuration will be something like this. This is your B, this is U, and it's like this. This is plus, this is plus. This is your open loop system. This is X dot, and this is K. Sorry, this is A. Then I am using a state feedback. So state feedback is being used like this. And it's being fed through a gain vector K. So I have it here. This is my NCM. I give to feedback. Now, since I am going to design a regulator where I want the output also to achieve a certain steady state, so what do? I have to introduce the output equation also. This is your C, and this becomes your Y. So with this, I want to use a proportional controller. तो अगर आपको वो वाली configuration जो अभी मैंने बनाई थी, वो आपको याद हो, तो proportional control की configuration कुछ ऐसी होती है. This is plus minus. This is RS. This is CS. Then you have the controller here, proportional controller. Then you have the system 1/1 plus ST जो हमने वहाँ पर लिया था. Plant जिसको आप कहते हैं या system जिसको कहते हैं. और ये उसका output है YS. और यहाँ से we define it like this. तो plant आपका तो यहाँ पे ये है. Sorry, this one. This is your X dot equal to AX plus BU और Y is equal to CX. ये आपका प्लांट है इस फॉर्म में. इसको मैं इनपुट दे रहा हूँ. यहाँ पे तो हम इनपुट यूजर रेफरेंस इनपुट में बता रहा हूँ. तो ये आपका सिस्टम है. ये आपका यूएस जा रहा है इसको और आउटपुट YS है. ये आपका U है, ये आउटपुट Y है. ये आपका प्लांट है. Are you getting me? ये मैंने फीडबैक लिया स्टेट्स का यहाँ से फॉर ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूवमेंट. ये मैंने फीडबैक लिया स्टेट्स का. ये मैंने एक एडिशन इसमें की एज कंपेयर टू द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल्स में स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता. अब मैंने ये वाला फीडबैक लूप इंट्रोड्यूस करना है. दिस पर्टिकुलर फीडबैक लूप आई हैव टू इंट्रोड्यूस नाउ. सो आई हैव गॉट दिस R हियर, इनपुट R. तो ये इनपुट R है. इसको मुझे Y के साथ कंपेयर करना है. सॉरी, दिस इज Y हियर. इसको मुझे Y के साथ कंपेयर करना है. दिस इज लाइक दिस. This is mine. Like this. So this gives me this particular signal, the error signal, because this is Y here. And then I have to multiply it by K. And then add it to U. इस केस में खाली मैं K यूज कर रहा था और फीडबैक की वजह से I was able to achieve the transient response improvement. Here what I am doing actually for
transient response improvement, I have this state feedback controller gain K. I'll call this KP just to distinguish it from this. This is basically the proportional controller. Are you getting me? Yes, sir. तो ये स्टेट फीडबैक विद प्रोपोर्शनल कंट्रोल है. तो इसमें जो कंट्रोल लॉ है वो क्या है? This is actually the error signal E. The control law here is U is equal to the minus kx, isn't it? Minus kx plus kp into E, isn't it? This U is equal to x यहां से आ रहा है. This is minus kx plus kp into E. Are you following me? Yes, sir. And what is E equal to? This is minus kx plus kp. What is E equal to? E is r minus y. Isn't it? Or I can write U is equal to minus kx plus kp into r. What's y equal to? Y is equal to cx. सही है? हाँ सर. Or U is equal to, I can combine it. So I'll get minus k, then minus kpc into x plus kpr. Is that okay? ठीक है ये? हाँ सर. Yes, sir. What will be the closed loop system equation now? Closed loop system equation can be obtained by substituting this U in the open loop equation. I open loop equation as x dot equal to ax plus bu. तो इसमें मैं u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, जो अभी मैंने u का वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन किया. सो u is equal to minus k minus kp c x and plus kpr. So what do I get? X dot s, that is ax plus b, and u के बदले ये चीज आ जाएगी, that's minus k minus kpc and x plus b kp, sorry, b kpr. सही लिखा मैंने? Is that okay? Yes, sir. X dot will be equal to what? A minus bk minus kpc x plus bkp r. So minus BKP. Minus bkp minus bkp, okay. A minus bk minus bkp. सही है? तो इसके जो क्लोज लूप आइगन वैल्यूज होंगे वो इस चीज से आ जाएंगे. ठीक है ना? क्लोज लूप आइगन वैल्यूज इसके एडजस्ट, उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू k और kp का ऑब्टेन करना पड़ेगा, और वही kp का वैल्यू वहां पे यूज करके you will get some value of the steady state error, which will, because it's a proportional controller, naturally you will get some improvement in the steady state performance also, but the value of kp जो आप यूज करोगे इसमें,
वो डिसाइड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस यू वांट फ्रॉम द सिस्टम. और कन्वर्सली स्पीकिंग, if you want a particular steady state performance from the system, you appropriately choose the value of Kp, then substitute this value of Kp here, and then choose appropriate values of K to get the desired transient performance from the system. Is that okay? Are you getting Yes, me? sir. Yes, sir. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको दो तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है. फर्स्ट, यू कैन गो एंड improve डिजाइन दिस फॉर द ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. So you choose a particular value of desired, or that will be given to you as the problem statement. The desired eigenvalues will be given to you. You obtain the the characteristic equation corresponding to the closed loop system, and the desired characteristic equation you also obtain. Then compare the coefficients. You will get the values of K and Kp for those particular desired values of the closed loop pole. Once you get K and Kp, that Kp you can use in that second term also, and that will actually give you that Kp you can use here to get the transient response as per the value of Kp that you have chosen. Conversely speaking, you can first of all choose some particular value of Kp to get some transient, so get some desirable steady state performance from the system. Use that value of Kp here, and then appropriately choose K to get the desired value of the closed loop pole. Is that clear? Is that clear to all? Yes, sir. Okay. तो ये तो बात होगी तीसरी कॉन्फ़िगरेशन की, स्टेट फीडबैक विद प्रोपोर्शनल कंट्रोल. तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि स्टेडी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं कि आपका जो स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस है, स्टेडी स्टेट एरर जो है वो जीरो हो जाए, particularly in the systems which don't have integrators in the forward path. You must have been told about the type of system in your fourth semester. Have you discussed that in the class? Type 0 systems, type 1 system, type 2 systems. Have you discussed those things? Yes, sir. Okay. तो आपने देखा होगा कि टाइप 0 सिस्टम, जैसे जो अभी वाला सिस्टम हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मैंने लिया था, उसका टाइप क्या है? जो मैंने ये वाला सिस्टम अभी आपके साथ डिस्कस किया, जिसकी की स्टडी स्टेट, जिसका की ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा था. व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम? 0. It's a type 0 system, and you will always find that type 0 systems will always give you zero steady state error to finite value of steady state error to step inputs. They'll give you finite value of steady state error to step inputs and infinite value of steady state error to higher order inputs. अगर इस सिस्टम को आप रैंप इनपुट अप्लाई करो, what will be the response like? अगर मैं इस सिस्टम को रैंप इनपुट अप्लाई करूं, this is T and this is RT. If I apply a ramp input to it, what will be the response like? The system is stable. It's going to be a ramp in steady state, but with a different slope than this. There is going to be something like this. The error is going to increase with time. Because in type 0 systems, if you apply a ramp input, it's going to give you infinite steady state error in this, infinite steady state error or infinite error in the steady state. और higher order inputs तो naturally जब ramp input के लिए infinite steady state error दे रहा है, तो higher order inputs जैसे parabolic input है, उसके लिए भी infinite steady state error दे देगा. Now, if you have a type 1 system, or if I improve the type of this system, how do I improve the type of the system? How do I make it type 1 system? इस सिस्टम को मैं टाइप 1 सिस्टम कैसे बनाऊं? हाउ डू यू डिफाइन द टाइप ऑफ द सिस्टम? सर ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं, दैट डिफाइंस द टाइप ऑफ सिस्टम. अगर मैं इसका टाइप 1 से बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ओरिजिन पे एक पोल करना चाहिए. सर इंटीग्रेटर करेंगे, इंटीग्रेटर लगाना चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए. ठीक है, मुझे एक इंटीग्रेटर फॉरवर्ड पाथ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए. इंटीग्रेटर से बेसिकली होगा क्या? इसका टाइप इंप्रूव हो गया, टाइप 1 बन गया ये सिस्टम.
तो अर्लियर ये वाला सिस्टम जो है स्टेप इनपुट के लिए फाइनाइट वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर दे रहा था, लेकिन अब ये सिस्टम स्टेप इनपुट के लिए 0 स्टेडी स्टेट एरर देगा। रैंप इनपुट के लिए ये फाइनाइट वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर देगा, एंड फॉर हायर ऑर्डर इनपुट्स it will give infinite steady state error like for parabolic input। लेकिन साथ ही साथ ये टाइप इंप्रूव होने से स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हो गई सिस्टम की, लेकिन साथ ही क्या हुआ कि इस सिस्टम का ऑर्डर भी बढ़ गया। पहले ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, isn't it? पहले ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, it was the first order system। Now what is the order of this system? How many poles does it have? Second order. 2. It has 2 poles। It's the second order system। और second order system में आपको पता है कि ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में ऑसिलेशंस नहीं आती, क्योंकि फिजिकली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स में खाली एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होता है, और ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स होने के लिए you should have at least 2 energy storage elements। So you will get a steady state error in this। Sorry, you have improved the transient performance, but at the same time you have increased the order of the system। That means the transient response of the system may deteriorate। Earlier this system didn't have oscillations in the response, but now it can have oscillations in the response, isn't it? Are you getting me? तो वही मैं स्टार्ट में आपसे कह रहा था कि जब आप कोई एक एस्पेक्ट परफॉर्मेंस का इंप्रूव करना चाहते हो, तो कोई दूसरा एस्पेक्ट परफॉर्मेंस का नॉर्मली यूजुअली सिस्टम्स में डिटेरियोरेट हो जाता है। तो आपने एक इंटीग्रल कंट्रोलर तो लगाया यहाँ पे इसकी स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इसका ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो सकता है। डू यू गेट मी? तो मैं जो पॉइंट यहाँ पे द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज दैट विद इंटीग्रल कंट्रोल इट इज पॉसिबल टू मेक द स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू 0। उसका रीजन क्या है? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के केस में हमने बताया कि जब आपका इनपुट 0 हो जाता है, अगर इसका एरर इनपुट 0 हो जाए तो इसका आउटपुट भी 0 हो जाएगा। मींस आपका जो सिस्टम है वो 0 इनपुट को फॉलो करेगा, तो आपका सिस्टम जो है वो डिजायरेबल परफॉर्मेंस नहीं देगा। लेकिन ऐसा इंटीग्रल कंट्रोल में के केस में नहीं होता। यहाँ पे भी आपकी एरर सिग्नल यही है, ये वाली आपकी एरर सिग्नल है ESS। इवन इफ दिस बिकम्स 0, the output of the integrator will have some value, because integrator actually takes the sum of all previous inputs and then generates the output। So even if the error here is 0, integration of 0 function which is uniformly 0 everywhere, उस function के लिए खाली integration 0 होती है। लेकिन normal dynamical systems में error जो है, error का तो पहले start में जब आप input apply कर रहे हो, एरर का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, फिर एरर कम होके इवन इफ इट बिकम्स 0, द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर विल बी टेकन इनटू अकाउंट द प्रीवियस एरर्स आल्सो एंड अकॉर्डिंगली जनरेट द आउटपुट टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट वैल्यू एट द डिजायर्ड वैल्यू। आर यू गेटिंग मी? इज दैट क्लियर? आपसे पूछ रहा हूं। Yes, sir. ओके, तो इससे हमें यह आइडिया मिला कि अगर मैंने स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस सिस्टम की इंप्रूव करनी है, तो मुझे फॉरवर्ड पाथ में प्रोपोर्शनल कंट्रोल की जगह इंटीग्रल कंट्रोलर लगाना चाहिए। अगर मैं सिस्टम की स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता हूं, अगर किसी सिस्टम में फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है विद सम इनपुट, एंड इफ आई increase the type of the system by introducing an integral controller here, I can make the steady state error even equal to 0। लेकिन साथ ही साथ जो हमने प्रीवियस केस में देखा, इस सिस्टम में एक पोल ऐड हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटर की अपनी डायनेमिक्स है, उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है 1/s है, तो इसमें एक पोल ऐड हो जाएगा। तो जो सिस्टम के पोल्स हैं उनको प्लेस करने के अलावा मुझे इस जो इंटीग्रेटर की वजह से पोल इंट्रोड्यूस हो जाएगा सिस्टम में, ये भी देखना है कि उससे सिस्टम की डायनेमिक परफॉर्मेंस कहीं डिटेरियोरेट तो नहीं हो रही है। सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस तो मैं इंप्रूव करूंगा, तो मुझे सिस्टम में ये जो पोल है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस तो इंप्रूव हो ही जाए, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू सी दैट सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पांस तो इंप्रूव होना ही चाहिए, but at the same time I have to see that the transient performance of the system does not deteriorate। So that conversation will be taken up in the next class। So we'll be talking about state feedback with integral control in the next class। Is that okay? Yes, sir. Is today's topic clear to you? Yes, sir.
तो ये टॉपिक जो आज हमने स्टडी किया है इसको आप at your place just revise it. We'll talk about state feedback with integral control in the next class. Thank you for today. If you have any query, you can ask me in a minute or two. 1-2 मिनट में पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना है. Next week we'll be taking in the next class, that's on Friday. We will be completing this one, and then after that we'll take up observability and observer design. So with that topic, actually, we'll be completing the syllabus of this course. Observability, observer design, and different configurations of observers. Then the combined system with the controller and observer. So it will take at least 5-6 lectures. So with that, we'll be completing the syllabus, and then we may engage some tutorial classes with you. There was one query that has come from one student regarding that canonical form. So that problem will also be discussed in the class. So any other query, if you have, you can just directly mail to me, or you can just talk to me. You can just discuss with me individually as well as in groups, wherever you have any problem regarding whatever has been discussed or what's going to be discussed in the class. Is that okay? Yes, sir. So if you have no query, then you can leave the class.